The appendix is divided into 4 layers: mucosa, submucosa, muscularis propria, and serosa. The inner lining of the appendix is covered by a glandular epithelium with intestinal mucous glands, and these glands are lined with epithelial cells, that is the simple columnar epithelium, and a high number of mucin producing goblet cells. Now we come to the histopathology of the acute appendicitis. Now here we can see that the lumen is dilated. Compared to the previous slide, here the lumen is markedly dilated. We can see inflammatory infiltrate coming into the lumen also. This inflammatory infiltrate comprises mainly of neutrophils. Now, how do you identify a neutrophil? It is a segmented WBC and has commonly 3 lobes. Along with the neutrophils, we can see many RBCs and some fibrin. Now see, in this appendix, this is the mucosal lining, and here there is absence of the mucosal lining. That means there is an ulceration. जो एक नॉर्मल अपेंडिक्स माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा दिखता है, अब वो देखते हैं. ये है इसका ल्यूमन. अपेंडिक्स की विशेषता है कि इसका जो ल्यूमन होता है वो संकीर्ण होता है और मुकाबले में इसकी दीवार जो होती है वो मोटी होती है. इसकी मुख्यतः 4 परतें होती हैं. पहली परत को कहा जाता है म्यूकोजा अथवा झिल्ली. म्यूकोजा की भी आगे 3 परतें होती हैं. जो सबसे पहली परत होती है यानी कि म्यूकोजल लाइनिंग, जिसे कि लाइनिंग एपिथेलियम भी कहा जाता है, ये होती है टॉल कॉलमनर लाइनिंग विद इंटेस्टिनल टाइप म्यूकस ग्लैंड्स. ये देखिए, हम देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये लंबे हैं, न्यूक्लियस सेल के निचले भाग में है, और ये है एक म्यूकस ग्लैंड. म्यूकस में जो सेल के अंदर जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें म्यूकस होता है और नीचे के हिस्से में न्यूक्लियस होता है. देखिए, ये सब हम देख सकते हैं, ये सब लंबे कॉलमनर सेल्स हैं जिनमें बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स हैं. म्यूकोजल लाइनिंग के बाद आता है हमारा लमाइना प्रोप्रिया. लमाइना प्रोप्रिया में अधिकतर लिम्फोसाइट्स देखे जाते हैं और उसके बाद आती है एक पतली सी लेयर मसल की, जिसे मस्कुलरिस म्यूकोजे भी कहा जाता है. देखिए, अगर हम इसे पहले की स्लाइड से कंपेयर करें जो कि एक नॉर्मल अपेंडिक्स की थी, तो ये जो इसका ल्यूमन है उसका ल्यूमन बहुत संकीर्ण था और इसका ल्यूमन उसके मुकाबले में काफी बड़ा है. देखिए, अब हम ये देखते हैं कि ये जो उसकी इस अपेंडिक्स की ये है, ये इसकी म्यूकोजल लाइनिंग है. ये म्यूकोजल लाइनिंग यहाँ पे चलते हुए इस एरिया में, इस हिस्से में म्यूकोजल लाइनिंग गायब हो गई है, यानी कि यहाँ पे म्यूकोजल लाइनिंग की अल्सरेशन हो गई है. और अगर हम देखें तो ल्यूमन में ये हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी दिख रहे हैं. When you see on the low power, you see it is a very highly cellular aspirate. You see all over these clusters of cells, and background is slightly hemorrhagic, but you don't see any necrotic debris or any something which is suspicious here. But very cohesive fragments are there. You go high power, you see the some kind of background here. This is myxoid material in the background. At places it looks like fibrillary background here. And look at the cells that are forming these fragments. And when you see these dissociated cells, you can see the oval to plump, very plump oval spindle cells. And look at these clusters again made up of these oval to spindle cells. Some of them are like hooked or curved kind of nuclei also. Now these proerythroblasts are more than 30%, total component more than 80%. The myeloblastic component is insignificant. That means the cells expressing MPO
will be very, very few. These are large cells, basophilic cytoplasm, few cytoplasmic vacuoles. What you find is PAS positive. Now, since these are erythroblasts, you will find them to be CD71 positive. Since these are primitive ones, so CD117 also is positive, and majority of the cells also express E-cadherin. So based on these, we can diagnose them on immunohistochemistry and also on flow. And then with PAS, they express a granular positive.